अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयदा फ़ातिमा और मैं हाज़िर हूँ अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज हमने जो है जी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करना है वाइट कॉलर एंड कॉर्पोरेट क्राइम्स के एमसीक्यूज़ का। ठीक है जी, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी। देखिए ज़रा, what do white collar corporate and organized crimes have in common? A. Serious injury to victims. B. Business enterprises. C. Homogeneous criminality. And D is targeted crime victims. तो ए का है जी बी ऑप्शन, बिजनेस enterprises. नेक्स्ट देखें जी, विक्टिम ऑफ कॉरपोरेट क्राइम रेयरली मेक देयर विक्टिमाइजेशन नाउन बिकॉज A. Frequently they do not realize they are victim. B. Serious injury or death is not common to corporate crime. C. Is the violations leading to most injuries are not illegal. And D. Corporation have top-notch lawyers. तो टू का है जी ए ऑप्शन, frequently they do not realize they are victims. जी नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्राइम इज़ नॉट कंसिडर्ड एन ऑक्यूपेशनल क्राइम? ए. मेडिकेयर फ्रॉड. B. Misuse of clients' funds by lawyers and brokers. C. Fraudulently cashing a check. And D is substitution of inferior goods. So C वाले का है जी, 3 वाले का है जी C ऑप्शन, fraudulently cashing a check. Next, the practice of frequently trading a client's share of stock to generate large broker commissions is referred to as A. Churning, B. Insider trading, C. A boiler operation, and D is check kitting. So fourth वाले का है जी A option, churning. Churning, right? Next देखिए, what is the average number of fraudulent bankruptcies that are filed every day according to the Federal Bureau of Investigation? A 50, B 100, C 250 and D 500. तो फिफ्थ वाले का जी C option, 250. Right? Next, the Major Fraud Act of 1988 USA created a separate offense to address the crime of A. Insider trading, B. Government contract fraud, C. Illegal monopolies, and D is the homeowners insurance fraud. तो 6 वाले का है जी B ऑप्शन, गवर्नमेंट कंट्रैक्ट फ्रॉड. राइट, नेक्स्ट देखें जी, सहमत वाला. Criminologists Paul Tracy and James Fox conducted field experiments concerning fraud committed by the IRS, B. Deceptive advertisers, C. Real estate salespersons, and D. Auto body repair shops. तो 7 वाले का है जी D ऑप्शन, auto body repair shops. Next, which of the following factor is considered the primary problem for accurately measuring the frequency of corporate crime? A. There is no central repository for corporate crime data. B. Most corporate violations occur in large companies. C. The precise definitions used for corporate crime. And D. The fluctuation of economic factors. तो 8 वाले का है जी A option. There is no central repository for corporate crime data. 9 में लिखा जी, which of the following attributed to the majority of tunnel worker deaths in Hawks Nest, West Virginia during the Great Depression? A. Pneumonia, B. Tuberculosis, C. Silicosis, and D. Dehydration. तो 9 वाले का है जी C ऑप्शन, silicosis. Silicosis, right? जी नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन अप्लाइंग क्रिमिनल लॉ टू कॉर्पोरेशंस बिटवीन 1850 एंड 1910? ए. द नोशन ऑफ कॉर्पोरेशंस possessing a soul. B. Reluctance to large corporations with non-feasance. C. Decentralization of corporations. And D is the rising power of government regulators. तो 10 वाले का है जी A ऑप्शन, द नोशन ऑफ कॉर्पोरेशन possessing a soul. नेक्स्ट है जी, organizational due to diligence has been said to do what, which of the following? A है जी forestall a criminal investigation, minimize like the likelihood of a criminal indictment. Regular C है regularly leads to the grant of governmental leniency, and D is all of the above. तो 11 वाले का है जी D ऑप्शन, all of the above. ठीक है, नेक्स्ट देखें, विच मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट कल्पेबिलिटी सजेस्ट दैट द कॉर्पोरेट कल्चर इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द कॉजेज ऑफ कॉर्पोरेट डेविएंस? ए. प्रोएक्टिव कॉर्पोरेट फॉल्ट, PCF.
बी रिएक्टिव कॉरपोरेट फॉल्ट RCF, सी कॉरपोरेट एथोस CE एंड डी कॉरपोरेट पॉलिसी CP। तो 12 वाले का है जी सी ऑप्शन कॉरपोरेट एथोस। Next, according to Cleanard and Yeager investigations, which of the following industries are most likely to be corporate violators? A. Pharmaceuticals and automotive industries. B. Oil and nuclear industries. C. Defense contractors and aviation industries. And D. Medical and food industries. 13 वाले का है जी A ऑप्शन। जी नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स कंसीडर्ड कॉरपोरेट क्राइम टू इनसिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द 1970s अकॉर्डिंग टू द एडलर टेक्स्ट। ए है एडविन सदरलैंड, बी मार्विन वोल्फगैंग, सी रॉल्फ नैडर एंड डी जेम्स क्यू विल्सन। तो 12 वाले का है जी डी ऑप्शन जेम्स क्यू विल्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइट कॉलर क्राइम? ए theft of art, B embezzlement, C tax evasion and D theft of trade secrets। तो 15 वाले का है जी ए ऑप्शन theft of art is not a white collar crime। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, वाइट कॉलर क्राइम refers to a group of non-violent crimes that generally involve deception or abuse of power and include the following: A. The newly emerging areas of high technology crime. B. Business related crimes and abuse of political office. C. Some aspect of organized crime and D. All of the above। तो 16 वाले का है जी D ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, मच एम्बेजलमेंट गोज अनरिपोर्टेड बिकॉज। ए का है जी मोस्ट केसेस इन्वॉल्व अ वेरी लिटिल मनी। बी मैनी बैंक्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट वांट द पब्लिक टू बिकम अवेयर ऑफ क्राइम्स दैट मे अंडरमाइन पब्लिक कॉन्फिडेंस। सी अ बैंक और अदर बिजनेस is willing to prosecute the offender and D none of the above। तो 17 वाले का है जी बी ऑप्शन। Many banks and other organizations do not want the public to become aware of crimes that may undermine public confidence। नेक्स्ट देखें जी, employees and vendors steal time and services by A. Padding overtime records and make false claim on travel expense forms, B. Charging for services not rendered not or good not delivered, B. C है putting friends or relatives on company payrolls and D. all of the above। तो 18 का है जी D all of the above। 19 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर क्राइम? ए है बर्गलरी बाय मॉडम, बी वेंडलिज्म, सी थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो 19 का है जी डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। राइट, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ वाइट कॉलर एंड कॉर्पोरेट क्राइम्स के। ठीक है जी, तो ये जस्ट 19 एमसीक्यूज हैं जी इस चैप्टर के जो हमने आज कवर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के एमसीक्यूज कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।